Hi, I'm Kunal Raginwar. We have drawn this pattern. You know, what we want is a consolidation of some kind. What actually happened ये level पे ये जो हमने mark किया था ये level, what has actually happened is सुबह सुबह market आया, rebounded but again didn't break down. So this is not a valid setup. This here is a valid setup where price breaks this level, a 3 minute pivot is made, not a consolidation, and then another breakdown. तो आज मार्केट बहुत चॉपी था, वेरी वेरी चॉपी मार्केट, वेरी डिफिकल्ट मार्केट टू ट्रेड इफ यू गेट ट्रैप्ड ऑल्सो. वील हैव अ लुक एट कि आज एग्जैक्टली क्या हुआ एंड वॉट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर मंडे. बट बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. सो नाउ वेलकम टू द गेम चेंजर्स. तो हमने कल ये ड्रॉ किया था फॉर अ 3 minute चार्ट. We have drawn this pattern. You know, what we want is a consolidation of some kind. What actually happened ये लेवल पे ये जो हमने मार्क किया था ये लेवल, what has actually happened is सुबह सुबह मार्केट आया, rebounded but again didn't break down. So this is not a valid setup. This here is a valid setup where price breaks this level, a 3 minute pivot is made, not a consolidation, and then another breakdown. This is a valid setup, but शायद यहाँ पे stops जा सकते हैं. So what one can do is re-enter again below this low. But overall it has not trended much. The reason being, ये जितना वॉलेटाइल डे था ना, मतलब प्राइस विशियसली केम डाउन एंड देन विशियसली वेंट अप एंड अगेन केम डाउन. तो ऑन अ डेली चार्ट इट मेड लाइक अ बिग डोजी. सो टुडे इट्स मेड एन इनसाइड कैंडल, राइट? सो दैट इज वाई द चॉपीनेस इज देयर. इट्स ओके, समटाइम्स ऐसे कैंडल्स आते हैं, बट इम्पॉर्टेंट इज टू नॉट lose money here and try and preserve your profits. It is very very important. Now what can we expect for Monday? ये inside bar हो गया, so we'll have two situations, a bullish and a bearish. For the bullish situation, what we would want is ये जो fall है ना, this fall, we would want to trade only if there is a gap up and price starts closing above the 50% level. You know, ये जो 50% level है, if price starts closing above that and consolidates and then heads up higher, that would be a valid setup. Okay, for long. For short it is a bit easier, and ideally the bias should be थोड़ा सा on the short side, because overall देखो ना, moving averages are pointing down. Unless we get like a great follow through day on the upside and totally trend change होता है based on some news, until then the trend is currently on the downside. So it's easier to trade on the downside, and that should be your focus. So what you should do is you should mark the day's low. जब डे का लो कन्विंसिंगली टूटेगा, a 3 minute pivot will form and then another breakdown. That would be a valid setup to short. Now we have discussed two scenarios, a bullish scenario and a bearish scenario. But overall आर्ली का डाउ थ्योरी एंड स्ट्रक्चर states कि the downside in the short term should be the focus for a day trader. ओके, सो द आइडियली दो अपसाइड का ट्रेड ना कम रिस्क के साथ लेना चाहिए. इट शुड नॉट बी टेकन विथ फुल रिस्क. चलो बाय. ओवर द वीकेंड आई एम गेटिंग आई एम गोइंग टू रिलीज अ वीडियो वेयर आई एम डूइंग अ कंपैरेटिव एनालिसिस of the previous bear markets
एंड जब ऐसा फॉल आता है मार्केट में जो अभी करंटली आ रहा है, हाउ एंड व्हाट हैपन्स, लाइक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि इसके बाद क्या होता है. सो इट विल बी अ वेरी वेरी गुड लर्निंग वीडियो. हैव अ लुक एट इट. चलो बाय, सी यू ऑन सैटरडे.